Hello friends, today we shall solve some more examples on the linear partial differential equations by making use of method of multipliers. So let us solve the example let's take up this example 2z minus y times p plus x plus z times q plus 2x plus y is equal to 0. This is obviously of the type pp plus qq equal to r. So capital P is this 2z minus y, capital Q is x plus z, and capital R is negative of 2x plus y because this term goes on the right hand side. So here the auxiliary equations are dx upon p, dy upon q, dz upon कैपिटल R. तो यहाँ पर P की वैल्यूज है 2z माइनस y, कैपिटल Q है x प्लस z और R इज नेगेटिव 2x नेगेटिव y. अब तीन ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज करना है एल एम एन एल पी एम क्यू प्लस एन आर, इनकी सम 0 आनी चाहिए. अब ये 2z है, यहाँ पे z है, तो इसको z करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले. तो 2z माइनस 2z ही 0 होगा, तो इसको हमने यदि -1 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये -2z प्लस 2z प्लस y माइनस y 2x माइनस 2x, ये सभी 0 हो जाएगी. देयरफॉर चूजिंग -1 to 1 as multipliers, therefore minus dx plus 2 dy plus dz is 0. Therefore minus x plus integral of 2 dy is 2y plus z is equal to c1. This is the first set of solution. Again देखो यहाँ पर एक चीज और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, P में x की टर्म नहीं है, कैपिटल Q में y की टर्म्स नहीं है और कैपिटल R में z की टर्म है. तो इफ वी चूजिंग what shall we choose, x y z as a multiplier, so x into p, y into q और z into r 0 होता है. See here 2xz माइनस xy प्लस q को y से मल्टीप्लाई करो, xy प्लस yz और इसको z से मल्टीप्लाई करो, -2xz माइनस yz. इनकी सम 0 आनी चाहिए, आती है. Therefore
हमने एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया, ये एल पी सॉरी एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड इंटू कैपिटल आर जीरो हो गया, देयरफॉर क्या होगा एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर plus y square plus z square is equal to c2. This is the another family of spheres in general is the general solution phi of c1 comma c2 is 0. Substitute the values of c1 and c2. c1 is minus x plus 2y plus z and c2 is x square plus y plus square plus z square. So that is how second example. Cos of x plus y times p plus sin of x plus y times q is equal to z. I am writing directly the auxiliary equations. Dx upon cos of x plus y dy upon sin of x plus y are the auxiliary equations. Now, how shall we solve using the multipliers? See here, dx 1 dx plus 1 dy plus 0 dz upon 1 into cos of x plus y plus 1 into sin of x plus y. This is in proportion with 1 dx minus 1 into dy would be in proportion with cos of x plus y minus sin of x plus y. See here, this step is important. Cos of x plus y minus sin of x plus y into dx plus dy upon cos of x plus y plus sin of x plus y is equal to dx minus dy. ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये यहाँ पर न्यूमरेटर में ले ली, ये इक्वेशन को ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। cos ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और ये साइन ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव dx प्लस dy।
on integrating. As numerator is the derivative of the denominator, it is log of cos of x plus y plus sin of x plus y equal to x minus y plus log of say c1, which means log of cos of x plus y प्लस दिस कैलकुलेशंस ही है, दूसरा कुछ नहीं है अभी, अपॉन सी वन क्यों हुआ? क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस लॉग ऑफ सी वन है, वो यदि लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस लॉग ऑफ सी वन, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है लॉग ऑफ ए बाय पी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू हो गई e टू द पावर x माइनस वाई. ये ब्रैकेट की वैल्यू e टू द पावर x माइनस वाई हुई, इसका मतलब c1 की वैल्यू cos of x plus y plus sin of x plus y upon e to the power x minus y. This is the value of c. Now we shall consider the next another part of this solution. Again, अब मैं क्या करता हूं, dx प्लस dy की वैल्यू क्या है, cos of x plus y प्लस sin of x plus y, इसको पेयर अप करता हूं dz by z से. और यहां पर क्या करता हूं, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करता हूं और √2 से डिवाइड करता हूं, 1 बाय √2, 1 बाय √2. ऐसा इसलिए करता हूं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 1/√2 है साइन ऑफ पाई बाय 4, साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4. So it is in the numerator I have dx plus dy upon √2. This is sine of x plus y plus pi by 4 equal to dz by z. So it is 1 by √2 times. If I put x plus y equal to t, dx plus dy would be equal to dt. So it is of the type dt upon sine of t plus pi by 4 is equal to dz by z. Or dt sine of t, 1 upon sine of t plus pi by 4 is cosec of t plus pi by 4 dt is equal to √2 dz by z. Now integral of cosec t is log of tan of t by 2
plus pi by 8 is equal to root 2 times log of z plus log of c2 log tan integral of cosec x is log of tan x by 2. Note this. It is also equal to log of cosec x minus cot x. Log of cosec x minus cot x की वैल्यू log tan x by 2 भी होती है. Log of tan of t is x plus y by 2 plus pi by 8 is equal to log of c2 into z to the power root 2 or tan of x plus y by 2 plus pi by 8 is equal to c2 into z to the power root 2 or c2 is equal to tan of x plus y by 2 plus pi by 8 upon z to the power. After finding out these values of C1 and C2, the general solution is pi of C1 comma C2 0. Substitute the values of C1 and C2. On substituting C1 and C2, that would be your proper solution of the given partial differential equations. Let us solve one more example. Third example. Z square minus 2yz minus y square times p plus x into y plus z times q equal to x into y minus z. Now, I am directly writing here the auxiliary equations are dx upon z square minus 2yz minus y square upon dy upon x into y plus z dz upon x into y minus z. So, this is the mixed example of grouping and multiply. See here how. In grouping, dy upon x into y plus z dz upon x into y minus z.
देखो यहाँ पर x कैंसिल हो रहा है, x is absent. So this is purely contains dy and y terms, dz and z terms. See, so cross multiplying and rearranging, I would have y dy. Therefore, y dy minus z dy. Z dy minus y dz minus z dz is equal to 0. Y dy minus times z dy plus y dz plus z dz. So I have separated the variables y and z. So y dy integrates y square by 2 minus. Now z into dy plus y into dz. It is differential of yz. So its integral is yz. So integral of this bracket is yz plus again z square by 2 is equal to c, or c1 dash, or y square minus 2yz plus z square equal to c1. This is the value of the first grouping solution. Now x dx plus y dy plus z dz upon, I have choosing x, y, z as multipliers. See what happens. We shall see this. X dx, y dy, z dz. Now, x into p is xz square minus 2xyz minus xy square. This multiplied by y plus xy square xy square plus xyz. This is multiplied by z plus xyz minus xz square. Check whether this becomes denominator becomes